एक बार फिर से आप सबको जहाँ जहाँ भी आप हमें सुन रहे हैं, वार्म वार्म गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से वर्चुअल टाउन हॉल कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की तरफ से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, चिल्ड्रन एंड मेंटल हेल्थ की ये वर्चुअल टाउन हॉल की सीरीज आज फिर से आपके साथ। कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ पहुंच गए। अब ये हुआ है कि कम से कम स्कूल खुल रहे हैं, तो बैक टू स्कूल की आज चर्चा करेंगे। फिर से स्कूलों में थोड़ी शोर हो, फिर से प्लेग्राउंड पे थोड़ी मज़ा, थोड़ी मस्ती हो, फिर से क्लासरूम हो और बच्चों की खुशियाँ हो। तो इस मुद्दे पे आज बात करेंगे। आप लोग अपने अपने सवाल लिखते रहिएगा, मैं उनको पढ़ के अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपसे बात करवाते रहूँगा। आइए मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से। प्रोफेसर के जी सुरेश जी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। उनके बारे में जब वो ज्वाइन करते हैं तब मैं आपको फिर से बताऊंगा। अमृता मधुकलिया जी है हमारे साथ। शी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट विद ओवर अ डेकेड्स एक्सपीरियंस ऑफ कवरिंग पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी। जी At present, she is working as a political reporter with Deccan Herald's Delhi bureau. उससे पहले she was a part of Team Earshot, a podcast platform. She's hosted her own show on politics and policy. In her earlier stint, she was with the National Political Bureau of Hindustan Times, has also worked with DNA, Tehelka, and India Today. Amrita ji, welcome for the town hall. thank you so much for having me over. और फिर हम चलते हैं ओशिमा माथुर जी के पास। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ नेवी चिल्ड्रन स्कूल न्यू दिल्ली। शी इज अ सीजन एजुकेटर with gamut of experience including being a teacher, vice principal and a principal. Rich exposure from teaching level onward, she has empowered dynamically in an innovative way and has been an academic leader who's empowered children, students, teachers, and parents. And she believes in creating a positive, happy, and challenging learning environment. Welcome, Ushimaji. Thank you so much, Dr. Parekh. Looking forward to the session. Thank you. एंड वी हैव मीमांसा सिंह तनवर जी। आप पहले दिन से मिल चुके हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की हेड हैं, बहुत ही जाना माना चेहरा है साइकोलॉजी के बारे में। रेजिंग कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन नामक किताब इन्होंने लिखी है और मेंटल हेल्थ करिकुलम स्कूल टीचरों के लिए उसको भी इन्होंने लिखा है। तो मीमांसा जी, वेलकम। थैंक यू डॉक्टर पारेख। थैंक यू, थैंक यू। चले तो चर्चा करते हैं बैक टू स्कूल के बारे में। अब बैक टू स्कूल की बात करें तो स्कूलों से ही बात शुरू करते हैं और प्रिंसिपल से सबसे पहले पूछते हैं। उष्मा जी ये बताइए, एज अ प्रिंसिपल लास्ट जो समय गया, चाहे वो सडन शटिंग स्कूल हुआ, बोर्ड एग्जाम हुए नहीं, 2 साल तक ऑलमोस्ट बच्चे स्कूल नहीं आए, हमने पढ़ाई डिजिटली घर से करा दी और अब बच्चे वापस आ रहे हैं। तो आपने तो ये 1.5-2 साल में पूरा रोलर कोस्टर देख लिया जी। सो आप बताइए, फ्रॉम एन एजुकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप बच्चों को इतनी नजदीकी से देखते हैं, तो आप बताइए कि आपने क्या देखा और हमारे लिए सबके लिए सीख क्या है इसमें। सबसे पहले तो ये है कि अब जैसे ही न्यूज़ आई कि स्कूल खुल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑन अ लाइटर नोट, सबसे पहले तो पेरेंट्स हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ कि वेरी गुड, एटलीस्ट जो टीचर इतने सारे बच्चों का ध्यान रखती हैं और या रखते हैं और पेरेंट को एक बच्चे को संभालना पड़ता है, तो उनको समझ में आया कि अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है। तो उन्होंने समझा कि क्या तकलीफ़ें हैं टीचर्स फेस करती हैं, कैसे अटेंशन स्पैन इतना कम होता है बच्चों का, तो कैसे उनको एक्टिविटीज़ में उलझा के, समझा के, प्यार से, कभी गुस्से से, कभी थोड़ा सा डांट कर, कभी बहुत प्यार से पुचकार कर, कैसे वो समझा के रखती हैं और कैसे बच्चे आनंद फानन में सब कुछ सीख जाते हैं। सो द पेरेंट्स हैव बिकम वेरी थैंकफुल, like all my parents have been praising the teachers that अरे हमें तो पता ही नहीं था टीचर्स को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब स्टूडेंट्स की तरफ से देखिए, स्टूडेंट्स के साथ जैसा कि आपने कहा, स्टूडेंट्स के साथ सब कुछ अचानक हो गया। एक दिन अचानक उनको बोला गया कि भाई अब कल से स्कूल नहीं जाना है, ये एक डिजिटल सिस्टम है, इसी में पढ़ाई होगी। अब पहले तो उनको बड़ा मजा आया क्योंकि साथ में एक डिवाइस में तो
सब कुछ क्लास होती थी, दूसरी डिवाइस साथ में रहती थी, उसमें इंस्टाग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, वो दोज नगेट्स ऑफ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब चलता ही रहता था। तो वो ओवर स्टिमुलेशन उनको बहुत रास आया, वो बहुत खुश हुए, पर कुछ ही दिनों में वो बोर हो गए। बोर मैं जानबूझ के कह रही हूँ, क्योंकि ओवर स्टिमुलेटेड स्टेट आप जानते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इज नॉट गुड फॉर एनीबडी। एंड रिफ्लेक्शन, थिंकिंग, इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता ओवर स्टिमुलेटेड स्टेट में। सो हमारे बच्चे ओवर स्टिमुलेटेड स्टेट में रहे 2 साल तक, और वैसे देखें तो 21 दिन लगते हैं, मात्र 21 दिन में आप एक नई हैबिट अडॉप्ट कर लेते हैं। और हमारे बच्चे 2 साल में जब वो इस ओवर स्टिमुलेटेड स्टेट में रहे हैं, तो उनके लिए तो यही नॉर्मल हो गया। अब हमने कहा अचानक फिर न्यूज़ आई अचानक कि अब स्कूल खुल रहे हैं, तो जहाँ पेरेंट्स इतने खुश हुए वहाँ 2 तरह के बच्चे थे। कुछ को तो लगा हाँ बहुत अच्छा है भाई जाएंगे, दूसरों ने कुछ कहा नहीं, वो डर गए। वो डर गए एक वास्ट एक्सपेंस में, वो एक अननोन जगह में जाने से, क्योंकि वो स्कूल से तारुफ नहीं रहा उनका। वो बिल्डिंग से डर गए, वो बाहर के लोगों से डर रहे। वो कितने 2 साल तक वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहे, एल्डर्स के साथ रहे। उन्होंने अपनी तरह की हाइट के, अपनी तरह की सोच के बच्चों के साथ उन्होंने कोई समय नहीं बिताया। कहा भी हमने किया सर्कल टाइम, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या वो कुछ, मुझे लगता है वो कुछ भी सफिशिएंट नहीं रहा। सो जब ये न्यूज़ आई तो वो एक्चुअली फिर से डर गए। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम उनको बहुत प्यार से, बहुत कंपैशन से, बहुत पेशेंस के साथ उनको वापस एक जो एक्चुअल नॉर्मल है उसमें लेके आए। और उसमें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें स्टैगर्ड ढंग से, जैसे हमने क्या किया, हमने 7 तारीख को 7 फरवरी को खोला 9 to 12। ये बच्चे स्कूल में आए, उन्होंने देखा हाँ सब कुछ ठीक है भाई, ये तो जगह अच्छी है, दिस इज अ सेफ एनवायरनमेंट। दे वेंट बैक होम, दे टोल्ड अदर्स कि सब ठीक है। 6 to 8 के बच्चों को हमने एक हफ्ते बाद बुलाया, उनको वो भी आए, उन्होंने देखा हाँ सब ठीक है। सो उनके भाई बहन हैं छोटी क्लास में, उनके और दोस्त रिश्तेदार हैं और सब लोग हैं, तो उन सबको उन्होंने बताया हाँ भाई सब ठीक है। तो आज 17 को हमने प्राइमरी स्कूल को बुलाया, और जब वो आए तो हमने सारे टीचर्स को यहाँ रखा, उनको बहुत प्यार से क्लासरूम में लेके गए, बलून्स, चॉकलेट्स जैसी चीज़ें की, ताकि बच्चे अपने प्रॉपर नॉर्म में आए। सो सीख ये है कि चैलेंजेस थे, और बहुत इवॉल्व जनरेशन है ये जिसने ये सब फेस किया, एंड दे हैव ओवरकम। तो हम लेते हैं सीख इन बच्चों से कि कैसे रिजिलियंस को सीखा जाता है, कैसे डिफिकल्टीज को पार किया जाता है। मेरा यही टेक है इस पर। Okay. Amrita ji, you've been writing about it. You would have also gone through various interactions with children and parents and teachers. मुझे लगता है कि all of them have had their own struggles and there is a learning from each one of their experience. So what have you seen during this reportage that you would have done over the last year plus? See, what I've largely seen in the 2 years that we've seen how children go to school, and there are two very distinct sort of experiences that emerge in terms of what we have seen. One is an experience of children who can afford to go to school, who can afford to have 2 devices in front of them, and then they can attend classes. And then you have another set of students who have altogether had to leave the entire education system because their parents could not afford it. So we've in the first 6 months of the lockdown coming in, the biggest pandemic that we could see, a silent pandemic, were happening inside homes, because of 2 very important reasons. One, because there was no money to have phones in a lot of homes, and then of course that also leads to a lot of social problems. So that is something that we saw, which I felt was a very alarming phenomena. 2 years later, we know that that phenomena has not really walked away. We still are facing at a lot of millions of children walking away from the education system. So that is something that the government, or everybody, all the allied players, should sort of sit down and figure out a system to sort of bring back children. And in terms of just the children who were going to schools, and the children who were actually being a part of the education system through friends, through with the help of their parents, and were interacting with friends,
I noticed something very I noticed something that was happening throughout this 2 years was that children who are very boisterous, children who are very confident, and children who put sort of put their message across in any group, in any setting, was sort of taking a step back, And I was talking to an educationist, and I had a long conversation with her about this, because she was of the view back in November that we should get all the children to school across the country, And she said that we are now we are now seeing a generation of children who will not know social interactions. I mean, you are looking at kids in their teenage years, where you're sort of, you're looking at new experiences, but all of that is happening within the confines of the home. You have nobody to share that with. You're looking at holistic development completely out of the picture. Your social interactions with your friends have come down marginally. You're basically conversing through a device, and so that sort of a limitation, that educational development obviously has had taken a huge beating. You're also looking at, like, development in terms of a person's personal development also taking a huge setback. And what was also happening for parents, a lot of them are my friends, and I could see that they were finding it very difficult to juggle education for children and their work, because when you say we're working from home, you are actually committing to a lot more work in the longer run, and when you're in office, you probably like take a stroll down and you have a cup of coffee, you spend 10 minutes there. But when you're working from home, that sort of doesn't happen, so you're constantly having to look at your own work, and you have to keep an eye on your child's work. So there also, I think a lot of these dynamics were at play. So in my to briefly put across my observations in these 2 years, 2.5 years now, was basically these things. आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये अब हमें देखना है कि किस तरह की स्ट्रगल हम सबको हुई है। हमने इस बारे में कई बार बात करी है। हम बच्चों की नज़र से देखें तो उनकी स्ट्रगल सोचें, खेल नहीं पाए, बाहर नहीं निकल पाए, चारदीवारी में, जिनको ऑनलाइन एजुकेशन कर पाए, वहाँ पे हमें ये चिंता थी कि डिजिटल यूज़ कितना ज़्यादा हो रहा है। जिन बच्चों को वो मौका नहीं मिला, और शायद कोविड ने बहुत कई लेवल्स पे हमारी इनिक्विटी और इनइक्वालिटी को और एक्सपोज़ ही किया है। उनको एजुकेशन में जो गैप आया, सोशल स्टिमुलेशन में गैप आया। वहीं अगर हम पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्क फ्रॉम होम भी है, बच्चों का ध्यान भी रखना है, खुद का भी रखना है। जो प्रेशर्स थे कोविड के, प्लस इकोनॉमी, फाइनेंस, जॉब, इतने प्रेशर्स। हम टीचरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने टीचिंग कम्युनिटी को जितना थैंक यू कहना चाहिए उतना शायद कहा नहीं है हमने, क्योंकि रातों रात एक फिजिकल एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट होना, ऑनलाइन चैप्टर पढ़ाना, उसको टेस्ट करना, सारा मटेरियल ओवरनाइट बनाना और बच्चों को एंगेज करना बहुत मुश्किल काम था। और मुझे लगता है कि जिस तरह की हम सोच फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए करते हैं, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ, जिन लोगों ने कोविड में बहुत रिमार्केबल काम किया है, बहुत इंस्पिरेशनल किया है, मुझे लगता है कि टीचर्स भी वहीं पे हैं, क्योंकि टीचर ने हमारे बच्चों के भविष्य को संभाल के रखा इस मुश्किल 2 साल में। और उनको भी तो अपना घर, अपना जीवन देखना है, तो कितना प्रेशर होगा, सोच के देखिए। तो यही लर्निंग है। तो जब हम बैक टू स्कूल की बात करते हैं तो इन बातों को हमें समझना है। ये वक्त आसान नहीं था, ट्रांजिशन आसान नहीं है, पर गोल बड़ा क्लियर है। जल्द से जल्द बच्चे स्कूल पे जाए और जरा खुशी का माहौल बने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। अब मेहमान साहब कुछ सवाल आए हैं तो मैं वही तुम्हारे पे सीधा तुमसे वो पूछता हूँ। मुस्कान आनंद जी पूछती हैं, और मैं 2 सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ आपसे, तो आप दोनों को बता पाएंगी। मुस्कान आनंद जी पूछ रही हैं कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि हम एक नॉर्मलाइजेशन में बच्चों की हेल्प करें। और दूसरा सवाल इंडिया फॉर चिल्ड्रन से आया है कि मेरी ग्रैंड डॉटर बहुत नर्वस थी स्कूल जाने के लिए। 2 साल हमने उसे कहीं पब्लिक प्लेसेस पर जाने नहीं दिया, और अब हम उनकी कैसे उस बच्चे को कैसे हेल्प करें जो 2 साल से अंदर है बाहर जाने में। तो ये पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की जो थोड़ी सी चिंता है कि बच्चों की चिंता कैसे सॉल्व करके उनके डर को हटाएं। और सीमा जी भी कह रही थी, अमृता जी भी कह रही थी, थोड़ा बहुत तो एक आदत
हो ही जाती है, 2 साल से अब घर में है, थोड़ी झिझक, थोड़ी हेजिटेशन आती है। तो आप बताएँ, थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए। मैं एक चीज से शुरू करना चाहूंगी कि फिजिकल स्पेसेस और पीयर एंगेजमेंट, ये दोनों चीजें डिस्पेंसेबल नहीं है। मतलब इनका इतना इंटेग्रल रोल है बच्चों की जिंदगी में, and that is something that we really need to acknowledge, that now that they are coming back to school, both of these things need to be really uh, be given a lot of value, and something that we've recognized in the last 2 years. Now अगर हम बात करें एंजाइटी की, किसी भी ट्रांजिशन में थोड़ी बहुत एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल सी बात है। बच्चा जो 2 साल से घर पर है, जिसका सोशल स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, सिस्टमैटिकली उसको धीरे-धीरे जो है एक फ्लेक्सिबल तरीके से सेंसिटाइज़ करते हुए आप उसको स्कूल में लेकर जाएँ। फ्लेक्सिबिलिटी दें, 1 दिन गया है स्कूल में, 1 घंटे के लिए गया है, फिर 2 घंटे के लिए गया है, 1 दिन पेरेंट के साथ है, दूसरे दिन 1 घंटे के लिए पेरेंट के साथ है। सो धीरे-धीरे जो है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन जो किसी भी बच्चे के लिए होता है जब वो पहली बार स्कूल में जाता है, वो होना ज़रूरी है। और ये पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि एकदम से घबराएँ ना, और ये ना सोचे कि आपके बच्चे में किसी तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है क्योंकि वो स्कूल में एडजस्ट होने में थोड़ा-सा समय ले रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इवन फॉर पेरेंट्स, एट दिस पॉइंट इन टाइम आप बच्चों में अभी भी ऊपर-नीचे चीज़ें देख सकते हैं। As a parent and as a professional, also seeing from my eyes that when you now that my child has also started going to school, certain days when she is not going to school because abhi bhi धीरे धीरे जो है चीजें हो रही हैं, there is a change in behavior sometimes, because जब आप स्कूल में जाते हैं, engagement करते हैं, जो stimulation अभी तक मिस हो गया था वो अब आपको मिल रहा है, suddenly फिर एक दिन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज आता है। So ये slow and steady change है, and we need to really go with the child's pace. We need to, हमने बहुत टाइम तक अपनी patience रखी, हमने बच्चों का resilience देखा, हमने अपना resilience रखा। थोड़ा समय और है जो हमें अपने आप को देने की जरूरत है, जहां पर बच्चे रीएडजस्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं दोबारा, हमें भी उसके साथ उनको इक्वली पॉजिटिव सपोर्ट देने की जरूरत है। अब बाहर जा सकते हैं तो प्लीज फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बच्चों को खूब सारी अपॉर्चुनिटीज दें, उनको प्लेग्राउंड्स में भेजें, उनको खेलने के लिए अलाउ करें। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं मदद करेंगी बच्चों को ट्रांजिशन बैक करने में। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हम सबको समझनी है थोड़ी-सी, कि जब हम बैक टू स्कूल की बात करते हैं, व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोविड के कारण एक ब्रेक आई है। जैसे मीमांसा ने बताया, एक ट्रांज़िशन से दूसरा ट्रांज़िशन। जिस तरह से शुरू में हमें घर में बैठने में हेजिटेशन आई थी, फिर हमें वर्क फ्रॉम होम या बच्चों की पढ़ाई फ्रॉम होम में धीरे-धीरे हमने एडजस्ट किया। स्वाभाविक है कि जब हम वापस शुरू करेंगे, थोड़ी एडजस्टमेंट आएगी और ये हमें समझना ज़रूरी है। और ये एडजस्टमेंट पेरेंट्स, चिल्ड्रन, टीचर्स सबके लिए है। पर हम मानसिक एंगल की बात कंटिन्यू रखेंगे, पर मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फिर भी करना है, नियम से करना है। बहुत ज़रूरी है ये बात कि हम, हाँ, बच्चे खेलें, बच्चे प्लेग्राउंड्स पे जाएँ, क्लासरूम में आएँ, बट हमें इस बात को भी समझना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में भी जानकारी बार-बार दें। प्रोफेसर केजी सुरेश जॉइन कर रहे हैं। मैंने जब कहा था आपसे कि हम वेट कर रहे हैं उनके जॉइन करने की। प्रोफेसर साहब न्यू दिल्ली बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं। इस समय ये वाइस चांसलर हैं माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, भोपाल से। ही इज ऑल्सो द एमेरिटस professor at the APJ Institute of Mass Communication, New Delhi, honorary professor with APJ Satya University, India's first liberal arts university. Earlier, he has also served as Director General of Indian Institute of Mass Communication, was the senior consultant editor with DD News, editorial consultant with Asianet News Network, and chief political correspondent with Press Trust of India. Professor Suresh, thank you for joining in. Thank you. My apologies for joining late. I was in another program. My apologies.
नो, नो। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ बार-बार बात कर रहे हैं बैक टू स्कूल बच्चों की, पर वही स्ट्रगल तो कॉलेज के बच्चों की भी थोड़ी-सी तो है ही। एब्सोल्युटली, And एब्सोल्युटली especially हम with तो students who have those exams, big exams coming, exam results delay, जो ये जो कुछ चीज़ें हैं, वो जो तनाव है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, यूनिवर्सिटीज़? थोड़ा इफ यू कैन हेल्प अस गाइड थ्रू दिस। sure, Dr. Parik, I would like to share with you कि we are a dominant specific university, for example. I'm just giving an example. सबसे इम्पोर्टेंट बिकॉज आफ्टर दिस ये जो छात्र हमारे विद्यार्थी हैं दे आर एंटरिंग द जॉब मार्केट, और उसमें सबसे जरूरी उनके लिए है प्रायोगिक प्रशिक्षण, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यू नो। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तभी आ सकते हैं जब वो लैब में आएंगे। लैब में नहीं आएंगे और कमरे में बैठे रहेंगे तो ऑनलाइन हम पढ़ा तो सकते हैं उनको, लेकिन हम उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं दे पाते हैं। इसके वजह से उनके अंदर बहुत बड़ा तनाव है कि कल को हम इंडस्ट्री में जाते हैं, हम प्लेसमेंट के लिए कोई आता है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। हम तो कैमरा को पकड़ना नहीं जानते हैं, हम उसको जो है किस तरीके से जो भी हमारे इंडस्ट्री की में आवश्यकता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना, ये हमें नहीं मालूम। कंप्यूटर का जो है वी आर ऑल्सो वी आर मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, so computer applications, we don't have high end computers at home, we just have a mobile phone and at best a laptop। हम क्या कर सकते हैं घर बैठे बैठे, हम कैसे कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का बीसीए एमसीए जो हमारा बच्चा कर रहा है वो किस तरीके से, तो बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है practical education particularly for university students because they are on the verge of getting their jobs, so that has led to a lot of depression। and what we have done is that एक तो हमने उनको घर में बिठाए जितना प्रैक्टिकल हो सकता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के चलते बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है which can be easily downloaded on your laptops and your mobile phones। वो तो हमने उनको टिप्स बता के दिए, लेकिन हमने साथ ही साथ हमने उनको काउंसलिंग किया है, और काउंसलिंग का एक रेगुलर सेशन हमने पहली बार अपने यूनिवर्सिटी में रेगुलर साइकोलॉजिस्ट को कंसल्टेंट्स रखे हैं हमने, जिनसे बच्चे जाके मिल सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ज़ूम कॉल कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। और मैक्सिमम बच्चों की यही चिंता थी कि अब जॉब मार्केट में क्या होगा। ये एक बहुत कठिन समय था हमारे लिए। सेकेंडली, जो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने पूछा, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको प्लेसमेंट तो एक बड़ा इशू है ही, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिल रहा। प्लेसमेंट भी अपने आप में इंडस्ट्री में इतना रिसेशन हो गया जिसके चलते जो है लोग प्लेसमेंट कम कर दिए, पीपल हैव कट डाउन देयर मैन पावर। तो ऐसे में जॉब मार्केट भी श्रिंक हो गया है, जिसके चलते आज देयर आर फ्यू टेकर्स फॉर द स्टूडेंट्स। अब इसके वजह से भी जो है एक डिप्रेशन, कहाँ पहले अगर 100 प्लेसमेंट होता था तो आज जो है वो सीधे सीधे 20-25 में रिड्यूस हो गया, इतना बड़ा लॉस हुआ, यू नो। तो अब ये एक बहुत बड़ा रिसेशन का, तो एक तो पढ़ाई प्रैक्टिकल टीचिंग नहीं हो रही है, सेकेंडली उनका चिंता का विषय है कि जॉब मार्केट रिड्यूस हो गया, तो पहले जिस तरीके से प्लेसमेंट होता था वो नहीं हो रहा है। नाउ फॉर द स्टूडेंट at the university level, these are far more important issues because they have responsibility to shoulder. Most of them, like I'm based out of central India, I'm a government university, मेरे बच्चे जो हैं वो निम्न मध्यम परिवार से और गरीब परिवारों से आते हैं। उनकी चिंता है कि परिवार की लोन लेके वो पढ़ाई करते हैं, उनका चिंता है कि माँ बाप का लोन कैसे उतरेगा। ये जो चीजें हैं इसको और ये डिप्रेशन का एक कारण बन गया है। और मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी को ट्रैक में आना बहुत आवश्यक है, हमारे पढ़ाई को बैक टू रेल्स आना आवश्यक है, सो दैट एवरीथिंग इज नाउ नॉर्मलाइज, so that they can take maximum। Yes, we are taking all COVID protocols, we are keeping that taking that into account, social distancing, and masking, ये सब अपनी जगह है, लेकिन बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि काउंसलिंग सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बट रिजम्पशन ऑफ regular classes, clearing of backlog so far as classes are concerned, and providing practical training to those students who have been left out। अब कई लोग पास आउट हो गए,
इन 2 सालों के अंदर विदाउट एंटरिंग द लैबोरेटरी, यू नो, उनको हम वापस बुला रहे हैं। आपको जब जरूरत हो, ये नहीं कि आप पास आउट हो गए, आपको जब मन कर रहा है आप आ जाइए, आप आके अपना लैब में यूज करिए, आप फिल्म बनाइए। तो वी आर ओपनिंग द डोर्स फॉर देम ऑल्सो, इवन द पास आउट स्टूडेंट्स, सो दैट दे कैन कम, यू नो। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स हमने लिए हैं, एंड दिस इज अ बिग चैलेंज, यू नो, दिस इज अ बिग चैलेंज। बिल्कुल। और मुझे लगता है एक बात जो आपने कही, जो मुझे आई मस्ट पॉइंट आउट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट्स तो हैं, यहाँ पे एजुकेशनिस्ट भी हैं, जो आप लोग पेरेंट्स सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात की इम्पोर्टेंस को समझिए। काउंसलिंग एंड केयर व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, वो स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, हमें उसे इंटीग्रेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि ये जो तनाव आया है, वो आप किस उम्र के हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आप मदद लें, किसी से बात करें, वो आपके टीचर आपको काउंसलिंग करें या आपके स्कूल के साइकोलॉजिस्ट करें या पेरेंट करें, वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चों को हम एनकरेज करें अपने बारे में बात करने से, सवाल पूछने से। बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात और बोली, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैं कई समय से कहते आ रहा हूँ, हमने इस प्लेटफॉर्म पे भी इस बारे में बात करी है। लाइफ स्किल्स एजुकेशन कितनी मायने रखती है। हम क्या पढ़ते हैं वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमारे में स्किल सेट क्या है कि हम अपने जीवन को नेविगेट कर सकें। तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पहलू प्रोफेसर सुरेश ने शेयर करे हमारे साथ। ओशिमा जी, आपके पास आता हूँ। एक सवाल आया है हमारे पास, दैट बच्चे जो थोड़ा डर रहे हों या पेरेंट्स डर रहे हों, पेरेंट्स इसलिए डर रहे हैं कि थोड़ी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, बच्चे इसलिए डर रहे हैं कि काफ़ी समय के बाद आ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कर सकते हैं? और इसी के साथ का एक और सवाल, ये मुस्कान आनंद जी का सवाल तो, और आस्था बजाज जी का सवाल है कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जिनको एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी है, जो अभी सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे थे और अब फिजिकल एग्जाम्स आएंगे, तो वो एंजाइटी, तो जो 2 एंजाइटीज हैं, आप अगर इस पे कुछ गाइड अस। जी, थैंक यू डॉक्टर पारिक। ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं आज के टाइम में। पहली चीज़ तो जो सिंस बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, सिर्फ 9th ऑनवर्ड्स बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, बाकी वैक्सीनेटेड नहीं है। तो मैं बहुत बहुत हर्ष के साथ आप सबसे ये शेयर करना चाहूँगी कि बहुत कुछ देखने में मिला। जब ये बच्चे वापस आए तो देखा कि ये बच्चे तो बहुत इवॉल्व हैं। दिस जनरेशन इज सो इवॉल्व। कितने सारे केसेस में sometimes I would tell the others to pull up their masks, but these children, they are following the cab behavior to the T, and I am so happy. They don't remove their mask, they don't go close to the other person, and they're small little kids, but they know the importance of cab behavior. So parents को ये पता नहीं है। हम स्कूल में रह के देख रहे हैं कि बच्चे, when there is nobody guiding them, when there is nobody supervising them, even then they are following the cab behavior. शुरू शुरू में हमें लगा शायद बच्चे डर गए हैं, बच्चे fear है उनमें, they are scared of it. Yes, they are scared of it, but they are precautious. So this is what we have to learn from them. This generation is an evolved generation. They understand the importance of कैब बिहेवियर। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस वक्त मैं एश्योर करना चाहूँगी कि आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं। आपके बच्चे बहुत समझदार बच्चे हैं। ये जनरेशन बहुत समझदार जनरेशन है। इतना सुन लिया है उन्होंने, इतना ज़्यादा जानते हैं अबाउट कोविड एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कि शायद हम लोग भी कुछ कुछ नहीं जानते होंगे। सो रेस्ट एश्योर्ड। एंड अनदर थिंग, स्कूल्स are doing their best. We are maintaining social distancing. Only 50% of the children are allowed in the school. The buses also, only 50% children are allowed. Even the sanitation points are there. The mask, today we distributed masks in the school also. So like that, every school, I'm sure, is taking real good care of the children who've come back. So I understand parents are worried, but I think we should have faith and trust in our this younger generation who are much evolved, and they're taking good care of themselves, and we are there. The teachers are they're taking very good care of the children. That's one. Second is about the anxiety and the fear of physical exams. So देखिए, एक बात और भी है. Again, I would say कि we are blessed to have these children. Only 5 to 6% जो results दिखा रहे हैं are the children who have either cheated or have not
done, I mean, they have not honestly done the online exams. More than 95% of the children, while sitting at home when they took the exams, they did not cheat. And at more than that, the parents were supportive. They were seeing that no hanky panky business takes place here. So when they have come back. Of course, practicals and all those things are new, and we are giving them lots of practice in the labs, like sir said, Professor Suresh. So in our school also, we live streamed the practicals. So at least they have seen with their eyes. Now, when they use their hands, we all know the education, the three education points, the three H's of education, the education of head, which is very prevalent in our country, education of heart, and education of hand. So now, education of heart and hands should take priority, and we are giving lots of exposure to the children. They're doing assignments, they're asking. In fact, it's very good that just we still have a month or so left for the exams, so they're asking their doubts. They have studied, now the doubts are being cleared. So I think it's the right time to come back to school. बिल्कुल, बहुत से लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। रोहित श्रीवास्तव जी ने लिखा है दैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। अनुषा त्यागी जी लिख रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन है आज के ज़माने के लिए। वेरी इम्पोर्टेंट इश्यू स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। सदाफ फारूक जी लिख रहे हैं। लेट मी कम टू यू अमृता जी, सवाल आपके लिए है। जो लॉस ऑफ एजुकेशन हुआ है, क्या उसमें हमने कुछ बच्चों को एजुकेशन के लैडर में खोया भी है? और उन बच्चों को उस लैडर पे वापस लाने के लिए what can be done? What are the government agencies doing? What is NGO sector doing? What is the educational institutes doing? Since you've been traveling and writing, so if you could give us an insight into this. See, a lot of, obviously, a lot of children, a lot of, like millions of children across the country have dropped out of the entire education system. There are studies which suggest that about 10 million girls are at the risk of giving up education forever. And if you look at the amount of children who've given up their education, जिनको force किया गया मैंने to leave education for the lack of resources, because the families probably fallen on hard times, or a lot of families don't have phones, you know. So what do you so if you just look at these numbers, आपको एक चीज सबसे ज़्यादा, I mean, you will be aware of one thing the most, is that almost always the child who has to make the tough decision to leave the education system is a woman, is a girl child. Because in our families today, even now, we are prioritizing, we are prioritizing the girl, the male child over the girl child children. So if there are three girls or four girls in a house, and there's one male child, and if there is a resource to have one phone, so the guy gets the male child gets the precedence, irrespective of कि बच्चों में से कौन ज़्यादा काबिल है. In fact, irrespective of merit, I always feel that everybody has a right to education, irrespective. But I also feel that here, at this point, when we are on the mend, when we are trying to pick up the pieces of what has happened to this country in the last 2 years, in terms of like the economic problems that we faced, not to mention the social issues, I think the government definitely should prioritize education of these children the most, Just say we already have the EWS quota in schools in Delhi. So why don't we have a central system where we are increasing that quota to a huge extent? So the I think obviously the NGOs can definitely come in and play a very important part in this. But मेरा मानना ये है कि the government has to show the way. So we had the RTE a few years back. I think this has to be the second step in the RTE program. This now in this scenario, in the post-COVID scenario, I think the priority for the government should be to ensure more and more children come back. Now, I'll give you an example. Okay, I mean, I'll give you an example of how things work. So you have these Anganwadi and Asha workers across the country, which is basically the first unit, uh, the basic unit of governance that you find across cities and across villages in the country. अगर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक आंगनवाड़ी लेडी या एक आशा लेडी who come to your village. Now during COVID also, after COVID also, they have been doing their duty for very nominal money. I mean, if I don't know if you follow, but they're still like now fighting for their rights to have more money, more remuneration. Now these women
the government of India had given them a, 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 a device in which जैसे बच्चों का हेल्थ नापना है आपको, जैसे मान लीजिए बच्चे का हाइट और वेट वट एवर, यू नो, जस्ट टू कीप द डेवलपमेंटल एंड malnutrition मार्कर्स, तो उनको एक डिवाइस दिया जाता था. Now, my question is that if we can give this Anganwadi women the device, why didn't we think of giving devices to younger children who definitely, you know, who definitely deserved a chance at education? You know, you could have involved companies, you could have involved CSR activities. Now, if there is a will, I always feel that there is a way. So I think this is a very crucial time we're looking at. We are at the risk of losing millions of children from this education system, and I think this is a very crucial time for us to sort of pause and think of what we can do. I mean, I still don't see discussions across, across the government. I mean, different players of the government on how to get these children back. We're not even acknowledging the problem, so we don't like. There's no roadmap at all. So I think the need of the hour right now, ki we should sit down, deliberate on what we can do next to get more children back into the system. I think absolutely. And to be honest, this is something which is the entire world struggling with. I mean, if you look at whether it is the WHO data on how many individuals went below the poverty line because of the pandemic, and how many children across the world have struggled from malnutrition to a lack of education, mental health issues, social, a lack of social stimulation. I think everybody needs to realize that we are all stakeholders and we need to do something about it. So, yes, children who are coming to school, we take the best possible care that we can, but we also work together to bring children back to school who, over the 2 years, because of various reasons, have been impacted and have been lost to mainstreaming school. Very important question here that comes from Rohit Srivastav. Professor Suresh, coming to you. चिल्ड्रन को कोविड का जो डर है, उस कोविड के डर को बच्चे, छात्र, सीनियर स्टूडेंट्स कैसे उसको हटा के एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं? जी, प्रोफेसर सुरेश, कैन यू हियर अस? Sir, you are on mute. Yes. Yes. Sorry. Yes, please. So the question is that how do children and students, actually students, children or teenagers or young adults, cope up with the fear of COVID? What can educational institutes do? Oshima Mathuji was saying how schools are being very responsible and encouraging COVID appropriate behavior. But फिर भी एक overall positivity and anxiety reduction के लिए, what do you think can be done by educational institutes? Okay. Dr. Parikh, am I audible? Yes, sir. Okay. Now, I personally believe that apart from the role played by, as you rightly pointed out, the role played by clinical psychologists, who have to be involved because they are professionally trained, I also believe that much would depend on the positivity of the teachers also. The teachers will have to be at the center of this. They cannot say that, okay, my job is only to teach. Their job is also to inspire and motivate. They will have to take upon themselves this very important, crucial role at this critical juncture. Because teachers are the ones who have to tell the students that no, whatever, loss, we will ensure that, you make up for it. Their biggest attention is that, one, they have lost the habit, as many of the eminent speakers here said, particularly in schools and even in colleges. People have lost the habit of studying. I mean, yes, they routinely, as a ritually, they attend the classes, but they are no more studying. Now, we will have to bring them back. That is the biggest challenge. And that role lies solely on the teacher. Of course, parents also have a role, particularly when it comes to school children. Parents also have to motivate the students. But it is the teacher, even in the school or in the college or in the university, who has to weave into his curricula. Now, how do we do that? And for that
I am somebody who is a proponent of teachers being trained by clinical psychologists. I personally believe that teachers should, howsoever senior may be, they may be professors, they may be associate professors, but they need to be, because teaching in the post COVID era is going to be different from teaching in the pre COVID era. Thus, in the same manner that teaching was different in offline and teaching was different in online. What people did was that they tried to do the same kind of classroom teaching sitting in front of the camera. But that was not online teaching, because in that, many students just muted their video and audio and were attending something else. We just did not make it participatory enough. It is important that it becomes participatory. The bright students may be able to make up, but the students coming from the weaker sections, they have to be taken special care of. Now, for that, you need the teachers, that is what I call TOT, or training of trainers, and in that, you have to have the component of sociologists, psychologists, educationists, who should train these teachers to teach, because teaching in the post COVID era is going to be a bigger and more challenging task than the teaching in the pre COVID era. I think that's a very valid point, and in fact, you pointed out a couple of things. So, just to give you a perspective, we've been doing basic counseling skills education for school teachers for quite some time. We have a module, and we are also doing a mental health curriculum module. And I'll let Mimansa speak about it since she's written that module. I mean that manual. So this is a manual where you train teachers on a mental health curriculum so that they can use the 10 years or so they have children with them to ensure that mental health related issues are addressed, because all of us in the world are worried now that as COVID starts going in, and in the undercurrents of mental health issues, social, psychological, emotional issues, people have talked about economic losses, job losses, exam related pressures. People have talked about, and Asta Bajaji also wrote about how a lot of people have lost their loved ones and bereavement, the various struggles we've gone through, and how mental distress, the distress component was so prominent during these times that we all need to work together on this. So मीमांसा आपके पास आऊंगा, मुझे आप बताइए कि किस तरह की ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, एक फ्यूचर मैप, रोड मैप अगर हमें आने वाले 3-4 साल में स्कूल्स के लिए बनाना है, and since you've written the mental health curriculum, so आप बताइए what can be done where the experts from the field of psychology and the field of education, teachers and counselors and psychologists come together and create the roadmap for future of our children, like what Professor Suresh sir was just speaking about, Mimansa. So I think I believe that we should have started a little earlier if we still have not started. But if we've not, then we need to start now. 3 things. One is mental health curriculum, like we spoke about, because that is one element which has been impacted throughout because of various gaps, inequalities, iniquities, and personal experiences for each and every one, whether it is a child, whether it is a parent, whether it is a teacher, educator, anyone for that matter. Everyone has been impacted and the experiences have been different. So, as a preventive, the understanding about what is mental health and how it is different from mental illness, that also needs to be there in each and every one for that matter. Because mental health is a component that has impacted for everyone. Mental illness is still another aspect of mental health. The second element is psychological first aid, where teachers are taught about how to observe, look what the child is, the kind of changes each and every child may be showing within the classroom, outside the classroom, how to observe it, how to listen to a child empathetically, emotionally validating, humanizing their experience. We've all gone through some of these things. So while I've gone through it, you've gone through this. That validation is very important for comfort and reassurance and a sense of security that a child needs at this point in time.
And the third element of psychological first aid is how to help them wherever you see that the child requires that particular help. So, if a child requires help in the education aspect, you connect them with educators, with special educators, with extra help from teachers. If there's a child who requires mental health support, you connect them, you give them your basic support in the form of basic counseling. At the same time, if the child requires more, you connect them with counselors in school or clinical psychologists outside of school. And this is how we bridge that link where every child may require. And the third aspect is media literacy. Because this is the time where children have been exposed to so much on media, we've seen so much of a lifestyle change, and like Mathu ma'am was saying, overstimulation of media as well that is coming in. Children have literally been on media without any education on how to go about media. So we've been talking about sanitization, but we've not been talking enough about social media hygiene. So we need to also talk about that. We also need to look at the skills, which I'm sure Dr. Parekh will add, what social media literacy skills that one could look at, because you've been talking so much and advocating so much about it. But media literacy skills, again, for adults, for children, again, is very, very important. And these three skills, I think, are something that we need to really look at. And when you talk about all of these things, of course, gender sensitization also somewhere comes at all of these levels. You talk about iniquity, you talk about mental health, you talk about media, you talk about, so that also somewhere as an intersection, I do believe certainly comes in, because all these elements are very important aspects of mental health. आई थिंक वेरी वेरी वैलिड पॉइंट्स जो लोग सुन रहे हैं, खास करके एजुकेशनिस्ट। 3 पॉइंट मीमांसा जी ने बताया, मेंटल हेल्थ करिकुलम, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, मीडिया लिटरेसी। हमें ये फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बात करते करते पता भी नहीं चला, 4 बजे शुरू किया था, 4:50 हो गए हैं। कुछ 10 एक मिनट बाकी हैं, आप लोगों के सवाल मैं देख रहा हूँ। मैं अपने एक्सपर्ट से थोड़े लास्ट कमेंट्स लेने शुरू करता हूँ, एंड देन जो भी और सवाल आपके कुछ बचे हुए हैं वो पूछ लीजिए। अमृता जी, आई विल स्टार्ट विथ यू हियर। Media, Mimansa talked about it. I was seeing you nodding on this very, very important thing. You represent one part of media. So, मीडिया से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी आता है, नेगेटिव भी आता है। और आज के ज़माने में मीडिया लिटरेसी इतनी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो बच्चे हैं जो अब वापस आ रहे हैं स्कूलों में, उनका इतना डिजिटल एक्सपोजर होके आ रहे हैं। सो हमने दोनों चीज़ें देखी हैं, हाउ मीडिया हैज हेल्प्ड एंड नॉट हेल्प्ड। योर थॉट्स अबाउट how the interface of media will play a part in education in years to come? See, before COVID started, we had something like TikTok, which obviously was banned by the government. But you also had uh, you had Instagram evolve, and then you had Instagram stories. So what I see is that a lot of these outlets, right? For example, I'm not. This is what I mean. I just don't want to restrict myself to social media outlets, but also to Yes. like media outlets, like a lot of mainstream media outlets like TV channels or newspapers. I'm not sure children really read newspapers. I'll be very like surprised to find kids reading newspapers, but TV is what we log in all the time, and I'm not really sure if I can vouch or advocate for TV news at this point of time, considering the standards that we have. So I'm not even going to go there. But as I mean, when we're looking at just children, and I look at behavior of children, adult children or younger children around us, we see that they like from our generation to there's a huge shift from like a TV to a mobile device. It could be an iPad, or it could be a mobile phone. So there's a huge shift. So when that shift happens, you also look at like media platforms shifting their content to suit that. So you have like outlets like platforms like Instagram stories, you have Snapchat, and you have God knows what all. Now I think that, I mean, in terms of how we educate our children, like in a sense, like when we were school, when we were in school, they were like in our convent, my friends in convent institutions, like I was in one for like 3-4 years. We had this subject called moral science. It didn't make sense to me at all. Even today, I'm trying to find, if I try to think that what is the point of it. But anyway, we had a subject called moral science.
And then one of my sisters is 8 years younger to me. She had completely different in terms of like her curriculum. So now as time progresses, I think we should also educate children in the sense of using these things, because I think that a child's attention is so less, and I don't know if parents really do that much of justice. And I feel that inside a house, in the sense that when we are teaching children in schools, I think perhaps a small time of that, like very small time, should be like kept aside. Ki, okay, fine, this is Twitter and this is how you use it, and this is not what you should do. I mean, I know that a lot of it, children are going to listen, and a lot of it they will not listen. But हमारा फर्ज बनता है कि हम एटलीस्ट थोड़ा सा उनको बता दें कि दिस इज समथिंग यू शुड नॉट डू, दिस इज समथिंग यू शुड डू. The other thing we can also do is that, I mean, now a lot of social media platforms are restricting younger children from looking at certain kind of content, that age specific एक बार तो है. How proactively are we sort of following that? I'm not sure. So they will ask you for your Aadhaar card, or they'll ask you for a whatever, some identification paper, and then on the basis of that the content is going to come. But even for adults like us, you see a lot of these videos, that come up with like gory details, like, lots of blood, and you don't even have that filter. So these two three things we have to keep in mind. The first is that a child is actually taught from a very young age about how to use these platforms. The other is that we have like big companies come with stringent terms, like in terms of figuring out what kind of person is using that particular platform. And as for TV, I genuinely feel that children should not be allowed to watch TV till a certain age, specifically not TV news. That's again a personal view. Okay, interesting. I will go to you, Professor Suresh. Uh, Next 3 years, where do you think the focus should be in education, taking care of children's future and mental health? I think that it's very important that we should understand that children have gone through traumatic times. It was not all a holiday as it was projected to be. It was a phase wherein they were deprived of their most precious years. I am a personal witness because my daughter was in a 12th standard during the COVID, and she missed out the most precious thing she was waiting all these years for, including her farewell, including the last year of school. So they missed out something big in their life. So they have come out of this. And similarly, young children, they've lost their peer contact. All these things have happened. So let us not think that वो अभी तक ये लोग घर बैठ के मजे कर रहे थे और अब no sorry they were not having मजा. They have lost out a lot, and we need to. Am I audible? I'm getting a message from Abha that my voice is not audible. It's now better. Okay. So what I said that, I hope you have heard what I said earlier. I said that, the kids were not having fun as it was sought out to be, it was projected to be. They have lost the most precious time, and uh, they were also under tremendous pressure at home from their parents. They could not go out, they could not play out in the field, they could not, enjoy their holidays, vacations. So it was a traumatic period. It was not a holiday. It was not a vacation for them. They need to be recuperated. They need to be brought back to normal life. They need all the possible psychological and physical support we need to extend to them. For that, it is important that the teachers and the parents, they both have to play very critical role in this. And for that, they need, I think that schools should organize, because perhaps all parents may not be able to go to a psychologist. I think parent teacher meetings should now have one session. All parent teacher meetings should have sessions
for counseling of parents. Parents need to be counseled how to handle their kids. This is very important. And this should become a routine part of PTMs, all parent teacher meetings. It is important. Similarly, the teachers, there have to be faculty development programs in universities and teacher training in schools wherein teachers have to be taught to handle the kids more sensitively. They have lost something precious. They need to be restored. Yes, absolutely. We need to look at some of And these last but things. not the least, it is important that education is far more practical oriented, pragmatic, particularly in the colleges because they are going out to the industry. Let us open the doors of laboratories, of play fields to our ex-students also so that they, they can come back and learn what they could not learn during the COVID. This much we should do. Thank you, thank you. Coming to you, ma'am, Shubha Mathurji, key things, let's say for the next immediate next 2 3 months, and then probably for the next year or so, the key things according to you that schools should be doing to take care of mental health of our children. Yes. So this time is very important now. What we have got now is that the children have come back, and now is the time when we don't have to see everybody is in a rush, everybody is in a hurry. Children have come back, make the education or whatever knowledge into a capsule and give it to them. So that approach is most harmful because children have undergone lots of stress. So we don't have to push or pull anything. We have to go slow and steady, cautiously. We have to bring them back to the mainstream, to the norm of educating them. So we don't have to try to train them. We don't have to try to put knowledge into them. It's just that we have to educate them. And education doesn't mean only the book knowledge, only the content of the syllabus. Most important in education is the team building, the collaborative approach. So what children have lost out is to meet their friends, to share their experiences, to talk to them, to enjoy togetherness. So we can start with circle times. We let the children sit in a circle or a semicircle so that they're able to see each other. The normal school setup, normal classroom setup is we are all facing, the children are all facing the teacher. So teacher, they've seen enough. They've not seen their friends. So let them share a glance. Let them be naughty, a little bit naughty. Let them, speak to each other with their eyes. So we have to give them that room. We have to give them that space. We have to allow them. So this is one thing which is very important. We can make small teams. We can give them projects, small projects, and let them interact. Let the sharing of ideas happen. So next 2 3 months we should build on these activities, build on these things, so that whatever social interaction they have lost on, it's not that they need to go close to each other. They can be away and they can. So that's what we say, let there be noise in the classrooms. These days we hear more noise in the staff rooms than in the classroom, because children have come back and they're shy. They have not opened up. So today morning we were welcoming children to school, and of course they were wishing. And when I wished, two three things I noticed was, one thing I noticed was, when I wished them, most of them responded. The others also responded, but they could not look into the in the eye. See how important it is. So the child somewhere has this thing inside that I don't. I mean, there is something. We have to. These are the signs. We have to really look for them, and let them, give them time and space to overcome. Second thing, some of them were walking little crooked, little awkward, because what has happened? They have been comfortable at home. They have not done any physical exercise. They maybe jumping a bit or so, but not they have not held their bags. Though light bags were there, they have not held. These are small skills.
They've not had food with their friends. So right now also we're not allowing them to share, but at least sitting together, first spreading the napkin and then having food. So these are small, small things which children have lost on. So I feel that our first and most important endeavor should be to bring them to the normalcy. This is the normalcy. This is our culture. Our culture is not sitting inside a closed room with all the curtains drawn and looking on into the screen. So I think it's time for us that we all work towards it and uh, let them be. The children recuperate. Thankfully, as Professor Suresh was saying, they recuperate fast. So we've all seen a child is sick, all down one day, next day he's jumping around. He's so chirpy. So thankfully so. So children do recuperate fast. We must cash on this. And Yes, that's it. Thank Just you. Dr. Parik, thank just to add to what Dr. Mathur said, just one line. What we did, it was such an emotional scene. When the students came back to school, usually as per the protocol, when the vice chancellor go to the class, it is the HOD who receives the vice chancellor and all. For a change, I was at the gate carrying rose in my hand, and I was welcoming each and every student. And the students became really emotional, when the first day they came back. We did that. We made them feel at home. Look, we were all missing you. They felt so good. And that is true, haven't it? Being that we've all missed children in schools. What better sight than a noisy classroom, where it's the vibrancy and the creativity of children that reflects into the corridors of school. I've just about time left for one last question, so I'll bounce that off. Mimansa Ruchika Upalberi asks, what children should now unlearn as well while learning starts? क्या क्या वो सीख लिया जो अब छोड़ देना है सीख, जिससे नई सीख के लिए थोड़े से दरवाजे खुल जाए? Then you can give us an answer to this last question. आई थिंक ये सवाल हम सबके लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। और जहाँ तक बात है कि इतना सब कुछ आपने सुना, एंड आई एम श्योर पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू अस can understand and feel and hope that children are in wonderful hands, जहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी के साथ जो है बच्चों को वेलकम किया जा रहा है स्कूल में। बच्चे वापस जा रहे हैं, they're going back to school, but they're not going back to the same time, of course, and that is something that we all recognize, and which is why we all need to be just mindful of the fact कि हम अपना वही पॉजिटिविटी, वही कंपैशन, वही पेशेंस और रेजिलियंस अपनी बनाए रखें। सीखना ना सीखना, क्या नहीं सीखना, ये सब प्रोसेस का पार्ट है, और ये धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे। हम भी सीखते आ रहे हैं अभी तक, अभी भी सीखा है और अब भी सीखते रहेंगे, और यही सब बच्चों के लिए भी है। तो आप बस अपनी एंजाइटी जो है कहीं ना कहीं एक नॉर्मल देखें उसको, बहुत ज्यादा एंग्शियस भी ना हो, बट थोड़ी बहुत एंजाइटी अगर आप लोगों को हो रही है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम सबको थोड़ी थोड़ी एंजाइटी होती है जब भी हम वापस ट्रांजिशन में जाते हैं, और हम भी सब जो घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वापस जाएंगे तो सबको एंजाइटी है थोड़ी बहुत कि कैसे एडजस्ट होएगा, अडेप्ट होएगा। इट्स फॉर एवरीवन, फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी एडल्ट। सो जस्ट go with the same spirit of joy, hope and positivity. जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बैक टू स्कूल की बात करते हैं, देन माय थॉट्स फॉर द पास्ट फ्यू डेज हैव बीन, हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चों ने क्या मिस किया सबसे ज़्यादा पिछले 2 सालों में। क्या मिस किया? स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी। दूसरा क्या मिस किया? फ्रेंड्स के साथ टाइम। ये 2 चीज़ें मिस करी। तो हमारा गोल सबसे पहले यही होना चाहिए। पहला गोल, चिल्ड्रन इन फिजिकल स्पोर्ट्स, प्लेग्राउंड्स, लैब्स लाइक प्रोफेसर साहब वाज टॉकिंग अबाउट, and get in the rhythm of physical wellness as well. Because also ये वो जगह है जहाँ पे दोस्तों के साथ समय बिताने का एक अपना ही मजा है। दूसरा, something that Oshima Mathu ji also said, group activities जिससे बच्चों की peer connectedness बढ़े। आप जो स्कूल के वो एनुअल डेज, कॉम्पिटिशन्स, म्यूजिक, आर्ट, वो ये अभी करने का टाइम है, क्योंकि आप ग्रुप बनाइए। कई पेरेंट्स ने मुझे पूछा है कि कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, कि अभी भी हम हाइब्रिड चला रहे हैं, तो हम जो बच्चे आने में हिचकिचाहट है उनको कैसे लाएं? तो उनको उनके दोस्त खींच के लाएंगे। आप उनके जो दोस्त स्कूल में जा रहे हैं उनको उनके साथ एक प्रोजेक्ट में डाल दीजिए, अपने आप थोड़ी बहुत बातचीत होगी, चिल्ड्रन विल गेट चिल्ड्रन बैक टू स्कूल।
पर जब हम बैक टू स्कूल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमने बात करी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमने यहाँ बात सुनी कि मानसिक स्वास्थ्य की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। हम ये बात भी समझते हैं कि हमारे पास इतने काउंसलर साइकोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए टीचरों का जो रोल है, एजुकेशनिस्ट का जो रोल है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। हमने मेंटल हेल्थ करिकुलम, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, मीडिया लिटरेसी की बात करी, हमने इक्विटी इक्वालिटी की बात करी, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो हम उन्हें खो न दें कोविड के कारण, एजुकेशन की लैडर पे चढ़ने से उनको भी हमें वापस लाना है। हमें बहुत सी चीज़ें सीखी हैं जो आगे सीख कंटिन्यू करनी है। हमने बदलाव सीखा, अडेप्टेबिलिटी सीखी, पॉजिटिविटी सीखी, होप, ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस सीखी, पर हमें कुछ चीज़ें छोड़नी भी हैं कि हमने ये सीखा कि सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट इज नॉट इनफ, सबको मिलकर काम करना है। डिजिटल कर लिया जितना करना था, थोड़ा फिजिकल और नेचुरल और क्रिएटिविटी की तरफ भी जाते हैं। सोशल मीडिया जरूर एक रोल है हमारे जीवन का, पर वो लाइफ नहीं है, वो जीवन का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। तो जैसे अभी बोला गया, द लर्निंग एंड अनलर्निंग, पर मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को पेंडेमिक के बारे में पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। पेंडेमिक से हमने क्या सीखा वो हम बार बार पढ़ाएं, जिससे जो हमारे साथ हुआ कि हमें पता ही नहीं था कि पेंडेमिक में क्या करना है, क्योंकि हमने पिछले पेंडेमिक्स के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं था, तो वो भी हम करें। और एक आखिरी बात, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने जिन्होंने ज़्यादा खोया है, ज़्यादा तनाव है जिनकी ज़िंदगी में, जो कुछ ज़्यादा गुजरे हैं परेशानियों से, उनके लिए खास कर स्कूलों में ऐसा प्रोविज़न हो कि उन बच्चों के साथ ग्रुप सेशंस, इंडिविजुअल सेशंस, पेरेंट इन्वॉल्वमेंट करें। हम सबकी ये ज़िम्मेदारी है कि जब बच्चे कमिंग बैक टू स्कूल, तो स्कूल एज द मॉडल ऑफ एन आइडियल सोसाइटी where there is equity, equality, and joy of living. Thank you, Professor Suresh. Thank you, Amrita Madhukalya ji. Thank you, Ashima Mathur ji. Thank you, Mimansa Singh ji. और ये हमारा वर्चुअल टाउन हॉल, हम फिर अगले महीने आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ हम बात करेंगे चिल्ड्रन एंड मेंटल हेल्थ की। इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू रखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ our friends at the Kailash Satyarthi Children Foundation, on behalf of the Fortis National Mental Health Program. Let's enjoy the fact that children are back to school. Thank you. Thank you. Thank you.